मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल। तन और मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल। काउंसलर को बताए अपना हाल, काउंसलर को बताए अपना हाल। जो सुने हमारे मन के सवाल। सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन। सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632। Hello, Namaskar, and a very good evening to all the viewers watching NCERT's live interactive session. This is Simran Singh and you have all connected with us through eVidya channel number 6 to 12. Besides this, you all know the different mediums through which you can connect with us for the diverse programs that we conduct throughout the day. One of the other mediums is our YouTube channel. As you all know, it is NCERT Official. So once again, a very warm welcome to all our viewers in our Sahyog program. Let me apprise you that Sahyog and Paricharcha, they are two special sessions under the MANODARPAN initiative, which is a special initiative by the Ministry of Education, Government of India as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. And we are running and conducting these sessions for all of you to provide guidance for mental well-being and psychosocial support to all the students, viewers and learners who keep on connecting with us across the world. And viewers, let me also apprise you that today is World Mental Health Day. तो आप सभी दर्शकों को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की ढेरों शुभकामनाएं. It's very important to raise awareness about being mentally fit, fine and sound, because mental health is as important as our physical health. So viewers, let me apprise you the topic that we are going to discuss for this day. It is mental health, breaking the stigmas, myths and stereotypes. Because I think nobody would deny the fact that there are still certain stereotypes that are attached or associated with mental illnesses. For example, if you are facing any sort of physical problem, readily you will go to a doctor. But whenever it comes to any mental health disorder, are you not reluctant to do that? Do mention it in the comment section. Let me also inform our viewers that we are celebrating the Mental Health Week for all our viewers. So keep on connecting with us and do mention about your questions, your queries either in the comment section of NCERT Official, or feel free to connect with us through the national helpline number flashing on your screens. I may repeat the number. It is 844-844-0632. And you can also connect with us through the specific mail ID of Sahyog, that is sahyog.ncert@ciet.nic.in. And for discussing at length about today's program, today's topic, we have with us our two special guests. So allow me to introduce you with the guest for the program. In the conversation we have with us Deepmala ma'am. Namaskar ma'am, good evening. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Ma'am is serving as assistant professor from DEPFE NCERT New Delhi. Then in the conversation we also have with us our practicing counselor Dr. Sanchita Singh. नमस्कार मैम. नमस्कार. आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है इस सत्र में. और सबसे पहले तो आप दोनों को भी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की ढेरों शुभकामनाएं. सेम टू यू. और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. तो दीपमाला मैम, इन द फर्स्ट प्लेस आई वुड लाइक टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन विद यू. Why is it so important to talk about mental health? Yeah, Simran, thank you so much. And as you have just mentioned, today is our World Mental Health Day, October 10th. Right? Yes. It itself says that mental health is a global priority. It is not something, a topic of West or topic of East. It is important for all of us. And when we are celebrating this day, it means this is a call for all of us to join hands. To spread awareness, to encourage people to take steps towards their mental health, towards their well-being, and towards also dealing with mental illness. And Simran, as you have just asked, why it is important to talk about mental health today? Because it's something of the past when we used to look at the mental health and mental illness as synonymically equal. Yes. Right? Whenever we ask somebody
Are you okay your mental health is okay? People might say, क्यों, मुझे क्या हुआ है? But this is not true. Mental health and mental illness are two different poles of a continuum, right? It is a continuum. You might have mental illness, but you might be in a positive frame of your mind. You are managing it very well. You are coping with it. You may be dealing with it, and you might be free of any illness, but you might not be in a positive mental health state. So it is important to talk about mental health because the topic we are going to talk about today, stigma, myths and prejudices, stereotypes, they all come from here, because we are not talking about it, because there is lack of understanding about mental health. We don't understand what mental health actually is. If somebody says, I am into a poor state of mental health today, people might say, oh, does it mean you are depressed? Yeah. Are you anxious? Right? We use so freely these kind of the terms which are, should be used after a diagnosis being made by a practitioner, by somebody who is actually into the field. We just see if somebody is talking about mental health, it means something is wrong with the person. Yes. Here lies the myth, reason we have still prevalent stereotypes in the society. So it is important to understand mental health, what it is. It is actually, I just shared, it is a continuum where we can also talk about not having mental illness, but it is also a component of our well-being. It is also how I deal with the people around me, which we called as social well-being. It is also how I deal with myself, how I take care of myself. It is how I adapt to my environment. It is not at all equal to mental illness. It is more than that, right? So it is important to talk about mental illness. Of course. Yeah. And at the same time, I believe it is really important and significant to also describe about the myths, the different kind of stereotypes that are associated with that. And for that, we have our practicing counselor with us. So, Sanchita ma'am, would you like to reflect on the different kind of myths that are associated, myths or maybe stigmas that are associated with this mental illness, mental health, about this concept? Yes, a very important question. In fact, there are many myths. In fact, if we see anybody who has depression, so we say that, अरे तुम्हें depression है, तुम्हें depression कैसे हो सकता है? So and then people try to avoid going to that person. कहते हैं कि अरे इन लोगों के पास नहीं रहो, क्योंकि उन्हें लगता है कि contagious है, क्योंकि they are thinking negative, तो हमारे दिमाग पे भी गलत असर पड़ेगा. So these are some of the myths, like it is contagious, and लोगों को लगता है कि ये mental health, क्योंकि आपने कुछ गलत काम किया है अपनी previous life में या कोई पोजेशन है, इसलिए आपको ये हेल्थ कंसर्न्स आ रहे हैं. लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये किसी को मेंटल हेल्थ कंसर्न है तो वो परमानेंट है, वो ठीक नहीं हो सकता. लेकिन जैसे आपने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि जैसे कि हमारा कोई भी फिजिकल, अगर हमें फीवर होता है या हमारा पेट अपसेट होता है, तो वो एक चीज़ है जो हुई हमारे साथ, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं. सिमिलरली मेंटल हेल्थ भी एक ऐसी ही कंसर्न है जो कि अगर हम एंग्शियस हैं या हम डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, सो वी कैन गो टू अ मेंटल हेल्थ कंसर्न प्रोफेशनल एंड वी कैन गेट क्योर्ड. इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ परमानेंटली विद अस like physical health. So there are many other myths like it is permanent, and a lot of time we inhibit by going to a counselor. कितने बच्चे हैं आज जो अपने स्कूल में एक काउंसलर के पास गए, और अगर वो गए तो उन्हें कैसा लगा, और अगर वो नहीं गए तो कोई गया तो उन्होंने क्या सोचा उसके बारे में. इन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार जब बच्चे काउंसलर के पास जाते हैं तो पीछे बहुत सारी बातें होती हैं कि अरे काउंसलर के पास क्यों जा रहे हैं, कुछ हुआ है क्या, ऐसी चीज़ें होना. और अगर हम स्कूल में ही बात करें, क्योंकि हम चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बुली किए जाते हैं स्कूल में, राइट? तो वो क्यों, देयर आर सर्टेन कंसर्न, या तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या दे लुक सर्टेन वे या दे एक्ट सर्टेन वे, एंड उनको फिर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है स्कूल में और फिर उन्हें बुली किया जाता है, एंड विच एड्स टू देयर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स.
So these are some of the stereotypes that are there. तो मैम यहाँ पे तो आपने विद्यार्थियों की बात की, लेकिन ये बहुत ही जनरल है. मान लीजिए आप एक ऑफिस में भी काम करते हैं, आपको लीव लेनी है, तो अब व्हाट सीम्स मोर रिलायबल कि मैं ये एक्सक्यूज डालूं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मे बी आई एम हैविंग फीवर, रादर कि आप ये एक्सक्यूज मेंशन करें कि आई एम नॉट फीलिंग मेंटली हेल्दी. तो मतलब ये एक्सेप्टेंस, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, इट इज़ फॉर रियल, इट इज़ देयर, वी नीड टू एक्नॉलेज एंड टॉक अबाउट इट. तो जैसे आपने मिथ्स की भी बात की, तो दीपमाला मैम, मुझे लगता है ऐसे बहुत से स्टिग्मास और स्टेरियोटाइप्स हैं जिन्हें हमें ब्रेक करना चाहिए, जिसके लिए हम अपने तमाम कार्यक्रम हर रोज लेकर आते हैं. तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्टिग्मास जो एग्जिस्ट करते हैं, स्टिग्मा इज अ फॉर्म ऑफ प्रीजुडिस, यही है जिनके कारण मिथ्स आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में. एज संचिता मैम हैज जस्ट मेंशन, वी आर इन द फेज ऑफ डिनायल. मेंटल हेल्थ तो ऐसी चीज ही नहीं है जिसकी बात की जाए, तुम्हें क्यों जरूरत है. इट द अंडरलाइंग, यू नो, इफ यू सी द अंडरलाइंग notion behind it is like mental health is not important, it is a sign of weakness, as she has shared. Only people with, you know, earlier we used to call them as insane also, that shows a stigma existing in the society. Now we don't use those words. Yes, we used to you know, we had the terms for the such institution who were working in this direction, like asylum, right? It rather, now it has shifted. Now we use mental health services, mental health practitioner. It is showing a good shift also. So something where certain stigmas are breaking down, we have to work more on it. But Simran, I want to, you know, highlight one beautiful aspect of this, talking about myths, stereotypes and stigmas, कि जब हमारी mental illness या mental health की बात जब होती है, one factor which acts as a protective factor, which acts as a preventive factor, और जो रिकवरी में भी बहुत हेल्प करता है, वो कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? मुझे लगता है मे बी वी कैन हील बाय टॉकिंग और कन्फाइडिंग आवर फीलिंग्स विद समवन एल्स whom we trust. True, whom we trust, our friends, our parents, our teachers and the people in our environment. And इसलिए मिथ की बात करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो लोग एक सपोर्ट की जगह एक बैरियर की तरह क्रिएट कर गए हैं, राइट? एंड अनलेस अंटिल वी डोंट ब्रेक इट, दैट रीच एंड दैट एबिलिटी टू फंक्शन एज अ इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेलबींग वुड बी डिफिकल्ट, रादर वी, यू नो. एंड इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने किसी का सुना था. द पर्सन शेयर्ड दैट व्हेन आई हैड डिप्रेशन, राइट, एंड व्हेन ही रीच्ड आउट टू पीपल आर वेरी सजेस्टिव, राइट, अच्छा ऐसा कर लो, ये दवाई मत खा लेना, दवाई के कारण ये हो जाता है, अच्छा ठीक है इसमें तो ऐसा होता है, राइट? क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज को एक ही जैसा देखते हैं, जी, है ना. हम कभी भी आई के लिए ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जाएंगे, लेकिन हम मेंटल इलनेस की बात होती है तो अच्छा ठीक है, राइट. हम ये बहुत बड़ा मिथ है, राइट. और हम इसीलिए जो कल्चरल फैक्टर है, अवेयरनेस, जिसके लिए आज ये डे सेलिब्रेट हो रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, right? The more understanding, the more awareness we have, the more we are able to deal with these myths, right? वो सब उसी स्टिग्मास से आ रहे हैं, right? कि ये तो सीक्रेट रखने वाली चीज़ है, ये तो वीकनेस का साइन है. एंड एन वेरी इंपॉर्टेंट मतलब मिथ इज दैट दिस हैपन विद द पीपल विद लो इंटेलिजेंस. बुद्धि की कमी है क्या तुम्हारे अंदर, तुम डील नहीं कर पा रहे हो? रादर इट इज़ अपोजिट. समटाइम पीपल विद serious mental illnesses may have very high IQs too. And they do have. We have seen a very beautiful movie, A Beautiful Mind, which is right based on a real Nobel Prize winner who was schizophrenic and who, right? So there is no association between intelligence and presence of mental illness. That's the biggest myth, and that makes people feel that talking about mental illness is a sign of shame, is a sign of weakness, is a sign of you know, some guilt and hopelessness, as Sanchita ma'am has just shared, कि कुछ हो ही नहीं सकता. They are treatable. If proper, you know, proper treatment would be taken, you can overcome them. You can, you know, grow out of them in a state of positive well-being, state of positive mental well-being, right? So that is one factor. One, I want to also highlight that as they are not threats, people, it is also come from the same factor she has just thought. Contagious होते हैं,
थोड़ा दूर रहो, वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, तो वो कैसी भी बातें कर रहा है, इट विल नॉट टच यू, राइट। मेरी बात करने से आपके मेंटल हेल्थ इलनेस से कुछ नहीं होगा, रादर एक सपोर्ट मिलेगा जिस इंसान को बात करने की ज़रूरत है। एक बहुत अनदर फैक्टर आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि हम एक काम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत इक्वली करते हैं, इक्वालिटी जो कहते हैं ना, हमारी सोसाइटी में थोड़ी सी सेग्रीगेशन, डिप्रेशन में कुछ भी है एक कोने में, सबको बुली जैसे मैम ने जस्ट शेयर किया, तो देयर आर डिफरेंट प्रीजुडिसेस, पहले हमें उसको ब्रेक करने की जरूरत है, मिथ्स तो अपने आप चले जाएंगे। बिल्कुल। और जैसे मैम आपने कहा था कि बहुत ही कॉमनली हम इन फ्रेजेस को, इन टर्म्स को यूज कर लेते हैं कि अ पर्सन इज डिप्रेस्ड, जबकि देखिए इट इज द वेरी बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू फील सैड फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस एंड टू फील हैप्पी, राइट, बट बीइंग सैड फॉर अ पॉइंट इन टाइम बिकॉज ऑफ सम रीजन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बीइंग डिप्रेस्ड और एंशियस, सो दैट्स अगेन इज वन ऑफ द स्टीरियोटाइप्स। एंड संचिता मैम, वुड यू लाइक टू एड्रेस अस मोर ऑन दैट? या इन फैक्ट आई वाज थिंकिंग, मैम ने स्टार्ट किया कॉन्टिनम की बात की, उन्हें स्केल की बात की, तो जब हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन या कोई भी मेंटल हेल्थ कंसर्न देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम सब में कुछ ना कुछ लेवल में एग्जिस्ट करता ही है। हम सब ही होंगे जो कभी ना कभी लो हुए होंगे, एंग्शियस हुए होंगे, या हमारे अंदर वो सारी पर्सनालिटीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। जब वो एक्सट्रीम में चला जाता है तब हमें डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है, तो तब होता है कि हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो हम सभी एक मेंटल हेल्थ कंसर्न से जूझ रहे हैं, और हम सभी, अगर आप कह रहे हैं किसी को पागल, तो हम शायद सभी पागल हैं। सो लेट्स नॉट कॉल दैट। किसी केस में हम सभी सच में कमज़ोर पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। एंड मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत कैजुअली ये वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैम ने बोला कि मुझे तो ओसीडी है, यू नो, तो इन वर्ड्स को, या मुझे तो डिप्रेशन है, या मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तुम्हें तो फोबिया है, यू नो, सो दीज वर्ड्स हैव बीन वेरी कैजुअली यूज, सो it should not be used casually because it needs to be diagnosed with the practitioner and then should be used. So this is one extreme of how it is being casually used, because कहीं ना कहीं जब आप ऐसे casually use करते हैं then you are actually, you know, building something inside you. जब हम कहते हैं कि मैं डिप्रेसिव हूँ, मे बी आई एम नॉट, आई एम जस्ट लो, देन आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर माई सेल्फ। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लग रहा है मैं डिप्रेसिव हूँ, बट आई विल पुट इट अंडर द कार्पेट, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम ओके, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। हम शायद खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। यस, सो दीज आर टू एक्सट्रीम, दैट either I am overly using certain terms which are inappropriate, or I am just shrugging it off or not accepting what is going on. So these two extreme, we have to come in a balance, and maybe we have to talk. So like ma'am mentioned that talking about is very important, because अगर यहाँ 10 लोग हैं तो यहाँ पर 4-5 लोग ज़रूर कुछ ना कुछ गो थ्रू कर रहे हैं, और शायद बात करने से हम बहुत कुछ जान पाए अपने बारे में। सो टॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वन ऑफ द वे हाउ वी कैन हैंडल दीज मिथ्स, राइट। सो या जी, तो जैसा कि आपने बताया दैट द डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन handle the stereotypes, so it's very important to understand that how we can overcome any kind of rough feeling that we are feeling. Anything. Now, as she mentioned that mental illness is also, it has got its bifurcations, it is of different types. तो अब इन सब से डील कैसे किया जाए, ओवरकम कैसे किया जाए, and does lifestyle play a major role in this? Right. So I think like we mentioned, सबसे पहले we need to be aware of it, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया हमें पोर्ट्रे कर रहा है मेंटल हेल्थ के बारे में, आजकल सारी मूवीज मेंटल हेल्थ के बारे में बन रही हैं, लेकिन कुछ हैं जो बहुत अप्रोप्रिएटली पिक्चराइज करते हैं मेंटल हेल्थ को, बट कुछ हैं जो कि उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को और ज़्यादा कंडीशन या रीइंफोर्स किया जा रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ दिस, यू नो, बिकॉज आई थिंक इन आवर, यू नो, हमें पढ़ाया नहीं जाता है मेंटल हेल्थ के बारे में, बट वी हैव सोशल मीडिया, सो वी कैन रीड अबाउट इट दैट व्हाट आर दीज कंसर्न्स, यू नो, व्हाट इज़ डिप्रेशन, व्हाट इज़ एंग्जाइटी, एंड यू नो व्हाट इज़ OCD, on all these concepts. So first of all, it's very important to become aware of it. The second is that, as simple as, you know, when you meet somebody, just ask, how are you doing? How are you feeling? You know, such small things we can begin with, and they'll say, you know, I am feeling a little stressed. Okay, what is, you know, what is going on? Would you like to share with me? You know, asking that what I can do to help you when you're going through, you know. So being a listening ear to others is where we can take a small step to
spread awareness or break these stereotypes. And being empathetic towards them, being non-judgmental, all these things are very small thing, but if we can inculcate even in our family, you know, we check with our family members and talk to my mother like, how are you doing, mummy, you know, as small as that. I think there we can begin. And not labeling them. If somebody is saying that I'm stressed, not labeling them, and you know, talking to them and listening to them is something we can do, of course. And other thing is that we can normalize it by talking and spreading awareness also. Now that maybe you know about it, so why don't you talk about it more and spread awareness to others? So this is also the way you can break the stereotypes. All right, and there are certain, I believe there are certain possible strategies that our students could try that can help them be out of any sort of mental illness that they are facing. So Deepmala ma'am, anything you would like to reflect on this aspect? Yeah, and why only students? Actually, teachers also have Of course, a very everyone important at large. role. In fact, not with ourselves, while dealing with our students. So the thing is, how do we perceive it first, as we are talking about till now? How do we perceive it? That reflects our attitude towards it, right? It is important to change the perception. Unless until we don't do that, that negative perception may result in, as she shared initially, bullying and harassment. So when we are dealing with the people, or we want to refer our students to the counselor, or we want to communicate them that you may seek help, it is important to look towards our language. It has a very important role, because it is something which creates or breaks the barrier, which creates or breaks the stigmas. In case if I am going and referring the student in a manner that oh, please don't share with others that I am taking this student to the counselor, it is something I am already sharing that this is something which has to be kept as a secret, or it is something very negative thing happening to the student. Rather, no, it is something we should have a dialogue with the other student also. Dialogue is very important at all the aspects. But before having a dialogue, we require to check what is my perception towards it. Yes. We have certain underlying preconceived notions about this thing that lead us to the denial, not in the society but within myself first. It should begin from here. Then only we should start working over it. I think I just want to add to what ma'am said, ki, I as a teacher, if I can go out and say that I also take therapy sometime, when I feel sad, I also talk to people and I also get emotional. So when I as a teacher become vulnerable in front of students, then they get that space to become vulnerable. That they can also say, okay, ma'am can get anxious, so we can. If she can, somebody in her family can be depressive, then somebody in my family can be also. And also, like ma'am mentioned very beautifully about the language. So a lot of time when somebody is depressed, we say that this is depressive person, So we should say that person with depression. So just like हमें fever होता है तो वो हमें define नहीं करता है कि आप या cancer होता है तो this is a person we say has cancer. Similarly, any mental health concern is something that is just has come to you and can go. It's not the whole of you. It doesn't define you. Yeah, it should not define you. He's a depressive person. He's a schizophrenic. Such terminology should not be used. Of course, so these are very tiny and minute details, and I believe some small nuances. One aspect that I think is very catchy, being non-judgmental. जैसे अगर मैं किसी तरह की मानसिक अस्वस्थ हूँ किसी भी रूप से और मैं आपके साथ इसे साझा करती हूँ, तो आप मुझे जज ना करें और उसके बजाय मुझे एक बेहतर सलाह दें, और अगर आप नहीं दे सकते, so maybe you can find someone around that can actually help me out. और मुझे राधा सिमरन, I'm sorry, I want to interrupt कि हम सजेशन ना दे तो ज़्यादा बेहतर है. As she has shared, we should ask open ask questions, right? That is more better. In fact, asking, suggesting something is like I am treating maybe it works for one and maybe it doesn't work for another. And we say like मुझे भी एक बार हुआ था, but even if I have depression and you have depression, it may have different meanings for both the things. Different levels, okay. Yeah, it is not RBC count कि 7 से 6 गया, iron count करो और बढ़ basic जाएगा. नहीं है कि ये organized है इस तरह से. True. So you require to understand what does the person is going through. So it is important to listen, and it is important to have more open-ended question. What you are going through. A person said कि yes, I was going through very low time of my life. Okay, ठीक है, low life
मूवीज लाके दे दी उसको पेरेंट्स ने, मूवीज नहीं देखनी है मुझे, राइट. तो एवरी पर्सन हैज डिफरेंट कोपिंग एबिलिटीज, राइट. हाँ, लेकिन हम कह सकते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का जो एक बेसिक मीनिंग है वो सेम ही है. इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग जॉयफुल. और कई लोग इसको जैसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि इट इज एन एबनॉर्मल स्टेट. अगेन इट इज नॉट. We all feel it some in one or the other way, and it is so beautiful of you to say कि being a teacher, if you can set an example in front of the students that I do feel vulnerable, so why can't you? Yes. I think that is great. So we would like to have very quickly concluding remarks from both of you, Deepmala ma'am. Yeah. So the concluding remark is same as the initial remark. Do have a dialogue, but with more empathetic and more open-ended approach. Try to know the person, not suggest their things to him. The person can resolve their things and try to help them, find out their inner resources over this thing. This thing can help them maximum. Of course. And Sanchita ma'am? I think I'll just say that today, if you're watching me, just go out and ask 2 people at least that how are you feeling and what you're going through. I'm here to just listen to you. Maybe I cannot help you because I'm not a professional, but I can just listen to you, and that might help, and I might suggest you to go to a practitioner. That's That all. helps a lot, in fact. Yes. Something as small as asking someone whether you are feeling okay or not. That can make a great difference, and of course make this world a happy place for everyone. So thank you so much, Deepmala ma'am and Sanchita ma'am, for the time and the valuable insights that you have shared on this auspicious occasion, that is World Mental Health Day. Thanks a lot. Thank you. Thank you to all the viewers who have connected with CIT NCERT for this particular live interactive session. Now it's a wrap up for this particular Sahyog program, and viewers, before concluding the program, an important piece of information for all of you regarding the availability of NCERT textbooks. As you all know that NCERT textbooks for the academic year 2023 to 2024, they are widely available all across the country, and you may purchase them directly from the different sales counters of NCERT that are currently located at New Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Kolkata and Guwahati. Also, if you would like to place an order online for these particular textbooks, then there's a website flashing on your screens. You may kindly note it down. And in case if you would like to download the textbooks in the PDF and the soft copy version and read them out, it's also possible through different mediums. One of them being Diksha platform, another one is ePathshala website, and also NCERT's mobile application. To explore more about the availability of the textbooks for different classes and different subjects, and also to know more about authorized vendors, feel free to connect with us and explore the website of NCERT, that is www.ncert.nic.in. Once again, thanking all of you for connecting with us in this particular program of Sahyog, where we were discussing at length about breaking stereotypes, stigmas and myths, and also considering the fact that mental health, mental illness, talking about it is really important. Listening and hearing, it can make a huge difference and impact in someone's life. So try doing that. Thank you so much once again for connecting with us, and keep watching eVidya channels. Take very good care of yourself. Namaskar. तन और मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल. तन और मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल. काउंसलर को बताए अपना हाल, काउंसलर को बताए अपना हाल, जो सुने हमारे मन के सवाल. सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन. सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन. मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632. नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632.